Kriti, is this live now? Yes. Okay. Good evening and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So we are a firm which tries to tell you कि दुनिया में कितने तरह के careers हो सकते हैं और उन careers में किस किस तरह की job profile होती है और उन job profile में पहुंचने के लिए आपकी personality कैसी होनी चाहिए. So we do a personality test, an aptitude test and an interest test. And on the basis of that we try to tell you कि these are the careers जिसमें आपकी जो thought process है वो match कर रहा है and these are the careers जिसमें maybe कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है बिहेवियरल लेवल पे आपको कुछ चेंजेस लाने पड़े या आपके एप्टीट्यूड से नहीं मैच कर रहा या फिर हो सकता है स्किल अपग्रेडेशन हो. सो वी कैन ऑल डू दिस थ्रू दीज टेस्ट. सो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशनल गुरुकुल. वी ऑल्सो रिव्यू यूनिवर्सिटीज एंड टेल यू कि फैकल्टी कल्चर कैसा है, स्टूडेंट कल्चर कैसा है, वहां पे प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कोर्सेज कैसे हैं, and we try to invite different people from that university and talk to you about their different courses. And we have this knowledge transfer sort of thing going on with different universities, जिसमें कल बेनेट यूनिवर्सिटी से लॉ के सर आए थे और हमने उनसे लॉ की बात करी थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबकी फैमिलीज में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में हो या इंडस्ट्री प्रोफेशन में हो. इन एवरी फील्ड जरूरी नहीं है. तो कभी कभी आप हो सकता है दूसरी फील्ड में आपके घर में ऐसे आप कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हो जिसमें आपको आपके घर में कोई उस फील्ड का ना हो, तो उसकी रियलिटी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट से, क्योंकि राइट नाउ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू. और हम वो जनरेशन थे शायद जिसमें अभी सर से ही बात हो रही थी कि नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज एंड you can take care of in our times those opportunities were emerging but now they have really come out on the surface. तो उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है. तो आज हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे वो हम लोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी. बहुत बज़वर्ड है, लोग जैसे एआई है सीएस वालों के लिए या डेटा साइंस है वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी सब लोग एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड वेरी फ्यू नो a lot about it. So मुझे भी नहीं पता था एज एन इंजीनियर. आई वुड रियली एडमिट दैट जब मेरे को था आई रियली डिडंट नो व्हाट दे यूज्ड टू डू इन बायोटेक्नोलॉजी. आई नो नाउ बिकॉज आई स्टार्टेड स्टडीइंग इट बिकॉज आई हैड टू गाइड स्टूडेंट्स की आप कैसे हैं. तो उसके लिए आज हमारे पास एनआईटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सौम्यदीप चक्रवर्ती हैं and now we will be talking with him from the ground level zero to the highest level which is available in India and abroad, research wise and company corporate wise, so that you can get a real picture. Now let me tell you about sir. He has done his PhD from IIT Guwahati. तो अगर आप PhD IIT से करते हैं तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है. शायद हम लोग जो एमटेक तक भी नहीं सीखते और एक PhD जब IIT से करते तो यू रियली गो थ्रू दैट ड्रिल. और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक भी किया है, पोस्ट डॉक फेलोशिप IIT बॉम्बे से. नाउ IIT बॉम्बे रिसर्च स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. सो उन्होंने वहां से केमिस्ट्री में आई थिंक सो देयर इज सम अनदर केमिस्ट्री, तो सर विल टेल अस अबाउट दैट. और उन्होंने काफी उसमें रिसर्च किया. सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल. Yes, so thank you, Sagar, for the warm introduction which you have given. Yes, yeah. So that is one of the thing, and yes, what you mentioned that in our generation things were much very different from what the students nowadays have the opportunity to do so. So we should be like these students are really getting a good opportunity. Like when we completed our BTech program. Our BTech engineering, like I did it from the West Bengal University of Technology, and then I did my master's also. So that time the options in case of biotechnology and all was very limited. Like there was hardly any companies who are mainly working in this particular sector. But there was only research which was based on, and there was a buzzword like if agar aapne biotech kiya hai, to you have to go for research. But nowadays the scenario has changed a lot. Like nowadays there is much options which are there, which is open to the thing. But first of all, what I was mentioning you before this meeting is that basically, do we actually know that what biotechnology is? So that is the main thing which is very important to understand. Okay, so as why I felt that, because I interacted with some of the students who just joined the university in the first year, and they mainly were
asking, were not very skeptic about what biotechnology is. So if you now look into the pandemic situation, so the pandemic has helped us to understand that what biotech can do. Yes. So each and every vaccine which is being produced in the market is a gift of biotechnology. It's Okay. nothing more than that. Okay. Okay. So you know that the virus is there. You know the Yeah. composition of the viruses. You know that how the proteins are and how. But let us, I think so, we should start from ground zero, because अगर आप Yeah. यहाँ से करते हैं, तो I Yeah, think so sure, sure. many will just we will miss That's out fine. them. That's fine. That's Yeah. fine. Yeah. तो So I अभी हम would. लोग पहले, yeah, yes Yeah, sir. sure, sure. If you have any questions specifically, I Yes, can yes, answer. yes, yes. Yeah. We have sir. Yeah. क्योंकि Yeah. जैसे 12th से स्टूडेंट निकला, क्योंकि हमें, and one thing I wanted to ask, क्या जैसे कि काफी क्रॉसिंग ओवर्स होती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, सिविल है, तो काफी क्रॉसिंग ओवर होती है, और एक ही तरीके में आप बीटेक सीएस भी होता है और बीसीए भी होता है, और मतलब काफी चीजें, तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ जैसे आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो और कौन सी फील्ड है अगर आप बता सकते हैं जिसमें मतलब which are also in some proportion involved. Okay. So there are a lot of fields which are is an amalgamation. So biotech basically, just to simply tell what is biotech, it is basically a manipulation. So you have to know the engineering part. Okay. So how you can engineer the normal cells which are there, living cells which are there, to create your own desired like values. Like you want to create that like bt cotton, we want a good variety of the cotton to be the market. So you can do with the help of the skills or the engineering skills which you have. So from Okay. that you can understand that there is a lot of things you have to learn. You have the options. There is a field which is known as bioinformatics, which gives us like we can simulate any kind of biological system with the softwares. Okay. To understand them better, like if you want to like I want to know that what is the DNA configuration of Sagar, so I can do it with the help of this particular tools which are available in case of bioinformatics. Okay. Now there are different type of, we want to do advanced imaging systems. Like you go to the hospitals, you see that there are MRI technologies, there are different type of like ELISA, like this COVID kits which are being created, all these things. So who actually is manufacturing this? Whose brain is going behind it? It is basically, you have to understand that how that protein and the blood is interacting, how your antibodies are interacting. So that is Okay. being given by an idea. Like you can go to the field of biomedical engineering, which is also a related field where you can do the imaging of an individual by like there you go to the lab, like in the pathology labs, you see there are they give us this CT scan which is being done Yeah. in 22 slides and all these Yeah. kind of things which are present. So that is one sector. Now the food industry, as food industry is having a huge scope, like each and every food which we are taking, like you talk about the organic farming which is there, which is nowadays really a booming field, and those organic those organic whatever the foods which are present, they are mainly coming out of this particular like the aspects of biotechnology, like how you can go. So there is an opportunity in food industry, as well as there is an opportunity in like in the medical sector. Like you want to develop any of this, so you are researching on any of the cancers, you can find out that is what is the root cause of this particular cancer, you can develop a drug based on that. So the whole amalgamation of biopharmacy, whole amalgamation of molecular biology, there is an amalgamation of Molecular chemistry. chemistry. Yeah, there is also an amalgamation of plant biotechnology, where you can modify your plants. Like you want a variety of rice which is like it will be resistant to any of the insects. Also you want that a large amount of your production will be done. So those kind of things can be taken care with the help of the biotechnology and the associated tools out there. Okay. So it is Okay. basically the engineering which we are doing to an Okay. and a living system, and Okay. that makes things much better. Okay. So And that is the this bottom line. thing, like what I understood was when you are in BTech, so you do this thing, you start learning how to do culture. तो क्या ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर Yes. मेकिंग दिस लाइव सेल्स, एंड देन एक्चुअली हम वही सेल्स को शायद स्टडी करते हैं, बट डीएनए लेवल तक तो नहीं स्टडी कर सकते No, माइक्रोस्कोप it is से it कि is वो it फिर no कैसे yeah करेंगे. we वो हम लोग माइक्रोस्कोप से डायरेक्टली आप you can look into the cells. Okay,
you can look into different part of the cells. Like if you go back to your 11th and 12th class, you have heard of mitochondria, you have heard of vacuoles which are there. So it is possible that with different type of the dyeing and all, you can look into those particular portions of the cells with the help of your microscope. But you cannot, you are very much correct that you cannot see the DNA directly. But we have a different technique which is known as a electrophoresis technique, which is there. Okay. And with the help of this electrophoresis technique, we can easily visualize that the DNA molecules. And also there are different type of the instruments which are there, which are known as polymerized chain reaction reactors. Okay. So they can build up your DNA molecules. So you when you are in a BTech course, when you don't have to think that you're only looking into the cells, but you are studying from the DNA level. So see, the BTech is the preparatory level where you will have the idea of all the things. So there will be a variety of scopes of the subjects which we will study. Just for example, like if you talk about the beverage industries which are there, okay, so about the fermentation processes which are there. So you learn the fermentation industry in India is a huge market, okay, and you learn to know that how to run a reactor, how to make alcohol out there, how to do a wine fermentation, how to do a beer fermentation, any fermented food, like if you take the example of the probiotics, like Yakult, we know nowadays people are using in a lot of the amount that to the immune system, and also to keep their systems very good, from the lactobacillus species which are there. So this all things are coming under the biotech, and people who are mainly having a flavor of all the subjects and all the courses which are there, together with the specialization. Specialization is very important, because if you are specialized, then you can just go to a particular industry which is industry. Okay. And sir, ये जो आपने चीजें बताई, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड सर, ये जो डीएनए वाला आपने बताया, तो ये इंडिया में भी पॉसिबल है? इंडिया में भी लोग रिसर्च इस पे करते हैं? वी इटसेल्फ, हम लोग का लैब जो है NIT यूनिवर्सिटी में, तो देयर आर लाइक फैकल्टीज हु आर मेनली वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप जैसे बीटेक लेवल में, अगर इफ यू टॉक अबाउट द NIT यूनिवर्सिटी, वी हैव 3 सेट ऑफ projects which are there. Like there is a capstone 1 project, there is a R&D project, there is a capstone 2 project, and you learn all these things. तो आपको सब कुछ ये सारे के सारे चीजें सीखने को मिलेगा. कोई वो आप अप्लाई कर सकते हो कोई प्रोजेक्ट पे जाके, कि कोई बैक्टीरिया को आपको मॉडिफाई करना है तो कैसे आप कर सकते हो. And this process of looking into the DNA, is this an expensive one? It is not so much. Like when we want to do it on our lab scale, that is not so much. But if we are talking about like if you are running the whole genome sequencing, like we are having the human genome sequencing on a large organism, then it is little bit costly. But those projects are being funded by government and all. That is a totally different issue. But in our level, when we try to modify or make out or want to do any kind of processes where we modify some kind of organism, so it is very easy to do in the lab. It can be easily being done. And now, because of the incoming of technology, so bioinformatics, now someone can learn actually and maybe make a model of like virtual environment for humans. Exactly. And then maybe we can test. So this is also very intelligent too, because you need to have very deep knowledge of all biomechanisms. So the thing is that if you you want a good variety of rice to be produced, okay. So what you do, you first sit with your laptop or computer, and then you look back into different type of databases which are there, okay. And in those databases, you will get like the information about the gene sequences of their pre-handed. So whoever has like sequenced the whole thing, they keep the gene information. तो सारे जीन इंफॉर्मेशन वहां पे आपको रहेंगे. तो आपको अभी देखना है कि कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोगों का वैरायटी इंक्रीज हो सके और मॉडिफाइड वैरायटी हम बना सके. तो उसी जीन को आप फिर मॉडिफाई कर सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स. so that will actually help you to understand, yes, and the things is done. So फ्री हैंड आप सब कुछ करके टेस्ट करके कि हाँ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, and then you can come back to the lab and do the actual simulation. So we always tell that the dry lab, that is the bioinformatics part, always run hand in hand with that of the wet labs which are there, what you do in the okay. So sort of this is like from हम बोलें कि agricultural हो गया, agriculture का भी application है, और फिर biology का भी है इसमें. Exact 100%. आप जो आप जिस चीज में जाओगे, टेक्निक्स आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली लगेंगी, बट आप किसी भी चीज में जाके exactly you can identify, मतलब एकदम
कोर में जाके एंड देन यू कैन मॉडिफाई समथिंग एंड देन टेस्ट कि क्या हो सकता है। तो ये तो थोड़ा डेंजरस लग रहा है सुनने में सर। अभी थोड़ा ये है कि there are some of restrictions which are there. okay. Like see, if you talk about the first clone which was there, it was a ship, Dolly. We know, everybody know that name. The Dolly is the first clone which was of the ship. But it was also possible to make the clone of any human being, and somewhat like it is अच्छा, ये possible. डॉली हमने सुना तो बहुत है, तो ये सही में पूरा लैब में ही बनी है? Exactly lab. ये मतलब पूरी तरह से आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन है? एकदम आर्टिफिशियल। अरे बाप रे बाप। और वो वैसी ही है जैसी गाय होती, मतलब बकरी होती है? एकदम एग्जैक्टली जो जैसे बकरी होती है वैसे टाइप का सब मतलब कुछ इसका फीचर्स है। वो जो आदमी जिसने ये किया होगा वो जिंदगी भर इतने हाई में रहा होगा, क्योंकि वो करने के बाद आदमी कैसे सो सकता है? एग्जैक्टली बिकॉज़ यू आर थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ, यू मेड समथिंग। अच्छा, मैं इतने सीरियसली कभी लिया ही नहीं इसको, नहीं, मुझे लगा इवन कुछ मिक्स होगा। हाँ नहीं, आप अगर ऐसे सोचते हैं कि अभी का जो अभी हम लोग न्यूज पे देखते हैं ये सब, ये सारोगेसी मदर, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज अबाउट लाइक द आईवीएफ्स व्हिच आर देयर, दिस आर ऑल गिफ्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मींस ये एक तरीके से आपका मतलब जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो आपको आप पॉसिबल बना रहे हो विद द एड ऑफ योर टेक्नोलॉजीज व्हिच यू हैव। दे ऑल्सो हैव, मतलब हम ये कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कंपोनेंट तो डेफिनेटली उसमें है ही, उसमें है ही। ओके ओके। तो सर इंडिया में इंडस्ट्रीज, मतलब ये तो इतना इंटरेस्टिंग है, तो मतलब कंपनी तो चाहती होगी, हर कंपनी चाहती होगी भाई हमारे पास 2-3 बायोटेक्नोलॉजिस्ट हों जो डिफरेंट तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स है, मतलब अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में अगर एग्रीकल्चर कंपनी हो और मेरे पास जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, तो मैं चाहूंगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हों उसमें कई सारे। अगर मैं खाने की इंडस्ट्री हूँ तो मैं चाहूंगा फिर मेरे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो चेंज, और फिर दवाइयों और खानों के बीच में कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इनो। हाँ, तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए तो फिर मैं चाहूंगा भाई कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो। देखिए जो अगर एक सिंपल चीज हम लोग समझने का कोशिश करें यहाँ पे, तो द मेन थिंग इज दैट इफ यू लुक इनटू द केमिकल ड्रग्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, ठीक है, so you take those drugs, what is happening, you are slowly killing your kidneys, you are slowly killing your livers which are there, ठीक है। now if that drug comes from a biological source, आप क्यों ड्रग ले रहे हो, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ बन नहीं रहा है, उसके सप्लीमेंट आप ले रहे हो, ठीक है। जी जी। तो आप अगर अपने सिस्टम में ही वो जो ड्रग है उसको जनरेट कर पाओ with the help of anything which is from outside, then it will be much more interesting. Like I take an example and I always refer this. If you have heard of this company which is known as Biocon, Biocon is the largest pharmaceutical, like biopharmaceutical companies in, like not only in Asia but also they are the largest manufacturer of human insulin. Okay. So insulin, yeah. So insulin is basically a combination of 3 proteins which are there. ठीक है, तो ये प्रोटीन अपने बॉडी में नहीं बनता है, इसीलिए लोगों को डायबिटीज होता है, एंड जो टाइप सी हो जाते हैं तो उसमें इंसुलिन आपको लेना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि इंसुलिन जो केमिकली प्रोड्यूस होता था, तो इफ यू पुट दैट इंसुलिन, ऑटोमेटिकली यू सी दैट देयर वाज अ ह्यूज लॉट ऑफ इश्यूज दैट somebody's kidney has gone, somebody has a liver defects which is there, okay. So what they have done is that they have made that insulin outside the body within a bacteria, but it is from the human genes. ह्यूमन जीन को यूटिलाइज करके वो इंसुलिन बनाया गया है, और वही इंसुलिन आप फिर अपने बॉडी में जब आप दोगे तो द चांसेस ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑल दिस थिंग्स विल गो डाउन ड्रास्टिकली। मतलब अगर मैं सही हूं, आप ये बोल रहे हो कि वो जो इंसुलिन में जो चीजें हैं, हाँ, वो मतलब आपने बनाया तो, बट आपने ह्यूमन बॉडी की सेल्स ली और उसी से बनाया। एग्जैक्टली। और वो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में बनता नहीं है, तो आपने सेल लेके बाहर बना लिया और उसी इंसुलिन को आप अंदर डाल रहे हो, तो उसका रिएक्शन तो वो तो आपके बॉडी का सेम ही है ना, मतलब बॉडी में कोई ऐसे नेगेटिव रिएक्शन होगा ही नहीं। तो किडनी पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, आपका लिवर पे भी नहीं करेगा, जो बाकी ऑर्गन्स है वो उस पे भी उतना इफेक्ट नहीं तो करेगा। मतलब आपका जो कल्चर, जो चीज मैं समझ रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि ये तो लग रहा है कि आप सब कुछ उधर ही कर रहे हैं और सब कुछ उधर ही चेक कर रहे हैं, मतलब अगर मेरे को बिकॉज आप अगर ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस में देखेंगे तो ये इंसुलिन बनता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जहाँ पे ये इंजीनियर्ड सेल होते हैं, जो सेल में जो कल्चरिंग आप बोल रहे हैं कि कल्चरिंग का बात है, तो उसमें सेल में ही इंसुलिन बनता है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन के थ्रू ही आप बना सकते हो, एंड क्योंकि वो ह्यूज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे फर्मेंटेशन से बना के फिर आप प्यूरिफाई करते हो। बहुत सारा स्टेप्स होता है कि जो अगर आप किसी को ह्यूमन बॉडी में डालोगे तो ऑटोमेटिकली द प्यूरिफिकेशन लेवल शुड बी मच हायर, so you have to keep in mind on those things, and फिर you can apply those insulins which are there. And before this, actually, I forgot, actually, I cut you off, I think so, by mistake. वो आपने बोला था restriction है, तो वो restriction actually क्या था वो नहीं आपने बताया, क्योंकि क्लोन में बात होने लग गई थी। Okay. Restriction ये है कि अगर आप like if logically आप अगर सोचे कि आप सागर बैठा है and I make another सागर out of you, okay, then there will be a huge issue with your identity. सर ह्यूज नहीं फिर वो ह्यूज वर्ड नहीं है, फिर तो पागलपन हो जाएगा, मतलब अजीब सा हो जाएगा, बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा, और चीजें मतलब आप मतलब यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, दैट इज अनकंट्रोलेबल थिंग। पहले तो आई पता चले होगा क्या होगा, कॉन्शियसनेस लेवल पे स्प्लिट हो रहा है। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज इस पे बने हैं, अगर कोई देखना चाहे तो मतलब उसमें समझ सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक आइलैंड करके एक मूवी था व्हिच आई सॉ एक्चुअली इन द आइलैंड करके, तो वहां पे ऐसे होता है कि जो बहुत अमीर मतलब लोग होते हैं वो अपना क्लोन बना के रख देते हैं कि अगर वो मर गया तो दैट क्लोन कैन टेक ओवर द ओल्ड एम्पायर। so this kind of things are basically like there is this ethical issues। so हर एक क्लोनिंग के पीछे या तो कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे एक एथिकल कमिटी रहता है जो जज करता है कि yes you can clone the thing or not, so that is very important। until and unless you get that approval, you cannot launch any product in the market, or you cannot bring anything in the research lab without their permission। so that is very important in this case, because you are working with live cells, you are working with live human models which are there, so that is very crucial from the point of view कि ethical issues are very important। yes okay sir, तो ठीक है, ये तो बात हो गई कंपनीज की, that there is because in application with anything, मतलब पत्थर से जैसे ही कॉन्शियसनेस आना शुरू होता है और सेल आ गया, सेल आते ही वो कहीं भी जा रहा है तो हम उसको ऑल्टर करने की कोशिश अगर करेंगे तो ये आ जाएगी बायोटेक्नोलॉजी, तो हर तरह से। तो ये हो गया कि जॉब तो मतलब आप हर सेक्टर में कर सकते हो, क्योंकि खाने मतलब जहां पे भी इनएनिमेट चीज नहीं है वहां पे हो सकता है आपका कोई यूज आ ही जाए, ऐसा हो सकता है। exactly। तो सर इसके आगे अब जाते हैं, अगर हम रिसर्च की बात करें केवल इंडिया में, तो पहली चीज क्या गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एग्रीकल्चर में भी तो फिर ये बहुत अच्छा हो गई, तो आर दे रियली लुकिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन इट, एंड व्हाट इज द मतलब एक तरह से क्या रिसर्च में पैसा है अभी? दूसरी चीज रिसर्च टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज अगर सोचें? देखिए बीटेक के बाद अगर देखा जाए तो यू हैव टू ऑप्शंस बेसिकली इफ यू लुक इनटू द होल पाथ व्हिच इज देयर, तो दो ऑप्शंस है। एक है यू गो टू द इंडस्ट्री साइड, और यू कैन गो टू द एकेडमिक्स। ओके, तो एकेडमिक्स में आप अगर गए तो यू हैव एन ऑप्शन कि यू कैन गो फॉर like your MTech, your master program, and then you can go for a PhD। but nowadays things are much more easier। okay, what happens, बीटेक के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, हाँ, एंड आप डायरेक्टली पीएचडी में जा सकते हो। सो दैट इज फॉर द इंडियन सिनेरियो। for foreign also, like for like the European countries as well as European countries, you don't have to worry about कि आपको वो मतलब कुछ दूसरा एग्जाम का सोचना नहीं पड़ेगा। यूएस के लिए आपको जीआरई एंड टॉयफेल का सोचना पड़ेगा, but if you talk of European nations, then automatically it is IELTS or any other English much easier to get। yeah, if you have a profile, मतलब अगर थोड़ा प्रोफाइल अच्छा हो। exactly, क्योंकि बिकॉज हम इजियर बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट यूरोपियन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स साइन आई थिंक सो बायोटेक्नोलॉजी में शायद यूएस से भी आगे हैं। exactly and even in engineering sector, in हर engineering sector में ही काफी ज्यादा अच्छा है। so if you talk about India specific, then what are the options which are there? एक तो है कि to get into this PhD program or get into an MTech program, first of all what you have to do is that the best part is that if you want a scholarship or a handsome number of scholarship which is being provided, then you can go through the GATE exam which is there। okay, GATE exam is basically focusing, so it is not only for masters in case of biotechnology, it is also for PhD। to get a PhD admission, if you crack the GATE exam, then your scholarship and all things are ensured। okay,
other way out, which I would suggest, that is a way out in a different direction. If you not able to, आप गेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो? तो क्या होता है कि not only IITs, so see there are options of IITs, NIITs. You talk about like different type of the CSIR institutes which are there, Yes. central universities which are there. There are like nowadays the private universities are also doing a very good research, and also they are providing like funding to the PhD students. Like in our university, there is a handsome amount of funding which is being provided to PhD students as a stipend, like around 30,000 rupees. So that is a very good amount To your PhD students. to do your PhD students. Yes. Good. So that is one of the very good factors. And also like you work in a project. So सेकेंड वे आउट जो मैं बता रहा था आपको, तो वो ऐसा है कि कोई किसी का ग्रेड क्लियर हुआ नहीं, तो वो क्या करेगा? उसको पीएचडी करना है या तो मास्टर्स करना है सारी. So the best option is that बहुत सारे GRF positions निकलते हैं, that is the junior research fellow positions, okay, which you can directly apply after your BTech. So it is बहुत applications आते हैं, and अगर JNU देखा जाए, IITs देखा जाए, तो ये नेट की जरूरत नहीं है, कोई नेट की जरूरत नहीं है इसके लिए ना नेट का जरूरत है ना गेट का जरूरत है, आपको सिर्फ वहां पे जाके एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. सो द लाइक यू विल बी वर्किंग इन दोस प्रोजेक्ट. सो क्या होता है कि आप जब उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो यू नो अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच आर देयर, ठीक है? तो वही इंस्टीट्यूट फर्दर मतलब अपना जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करते हैं. और अगर ये इतने लेवल पे विदाउट नेट और विदाउट गेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब इस वक्त पैसा रिसर्च में होगा. एग्जैक्टली दे रहे हैं या नहीं, तो देते ही नहीं. एग्जैक्टली काफी सरप्लस में होना चाहिए. तो मतलब प्रोजेक्ट भी ऐसे हो रहे हैं जिससे कुछ इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा साथ ही साथ. तो आई थिंक सो, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस. यू कैन नॉट से एज अ कंट्री एज इंडिया हम कहीं जा रहे हैं, मतलब यूएन के किसी समिट में या इधर जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये अपने में ही प्रॉब्लम है. एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, देन समहाउ बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, सो इट जस्ट गेट्स इट कि लगता है अच्छा ये होना चाहिए. तो आई थिंक सो फिर ये तो बहुत अच्छी. nowadays see the thing is that there is a lot of applications which comes through कि जो अपना फंडिंग के लिए applications होते हैं, and obviously वो फंडिंग के applications मतलब there should be some merit to the project. Obviously why anybody will fund you, but from there is a like if you look into the Department of Science and Technology, it takes care of physics, chemistry, mathematics, electronics, mechanical, everything, ठीक है? But we have a separate government organization which is known as Department of Biotechnology. Okay. And that particular section is taking care of all the biotech projects out there. So biotech में project मिलना, अगर आप वहां पे apply करते हो, तो it is much more easier. So that funding is also growing in those cases. And एक आप सेपरेट डिविजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे और आई थिंक सो ऐसी चीजों में जैसे आई वाज लुकिंग एट योर वर्क, तो आपने कोलन कैंसर सेल पे काम किया है. मतलब अब तो कोलन कैंसर तो सेल सबकी अलग अलग होती है. आई थिंक सो लिवर की अलग तरह की है, कोलन की अलग तरह की है. तो आपने कोलन पे वर्क किया है, तो इसमें आपका सर जैसे क्या वर्क था? एंड नो प्रॉब्लम सर. ये तो इसमें आपका क्या जैसे काम था, और क्या ये मतलब हमें हॉस्पिटल्स, क्योंकि इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, तो हम, और डेफिनेटली कैंसर जैसी चीज में अब हमें रिसर्च मतलब कितनी एंड ही नहीं है ना, आपको हर चीज का चाहिए ही चाहिए. एंड यू हैव टू गो इनटू रियली डेप्थ ऑफ एवरीथिंग कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो सेल के लेवल पे बहुत ज्यादा हो रहा है. एग्जैक्टली. तो क्या हुआ था, एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड यू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप ऐसे टॉपिक्स लीजिए एंड please look into them, maybe there's a big breakthrough there. Yeah, sure. So first of all, this was one of the part of my PhD work. So that is a last part of my thesis where I have worked on this particular thing. तो उसपे क्या हुआ था कि हम लोग कुछ एक में एंजाइम सिंथेसिस किया था, जहां से मतलब ये पूरा का पूरा किस्सा शुरू हुआ था. तो मैं एक एंजाइम सिंथेसिस किया था, और एंजाइम कुछ प्लांट जो होता है, अपना जो प्लांट होता है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि वी नो अबाउट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जिससे पेपर बनता है, या तो जिससे सारे के सारे जो चीजें बनता है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है प्लांट के बॉडी में, जो एक्चुअली क्या होता है, जो पेक्टिन लेयर बोलते हैं, पेक्टिनेशियस लेयर हम लोग बोलते हैं. तो ये फ्रूट जूस वगैरह पे ये सारे के सारे चीजें बहुत मतलब उसका क्लैरिटी में दिक्कत ला सकता है. तो इन केस ऑफ वाइन एंड ऑल, ऑल्सो देयर इज
huge issue of this clarity. So we use this enzyme अच्छा, to मतलब एक clarify. पतला छिलका, मतलब हम हाँ, माने पतला छिलका, बादाम है तो हाँ उसके ऊपर से अगर exactly हम छिलका ना हटाएं तो जैसा वो हो जाएगा, वैसा प्रॉब्लम आपके साथ था। और आपकी लेयर कितने नैनोमीटर्स में है, माइक्रोन्स में? नो, माइक्रोमीटर्स में ही है, 10⁻⁶। मगर वो एक्चुअली क्या करता है कि ये सारे के अगर प्लांट का बॉडी में आप देखोगे तो वहां पे आपको जो एक एक सेल को पकड़ के रखता है, तो ये लेयर है उसी का, मतलब ये एक ग्लू जैसा है जो जिसको वो मतलब रिजिडिटी देता है पूरा सेल को और पूरा टिश्यू को फॉर्म करने में, और फिर प्लांट का पूरा बॉडी बनता है। अच्छा, मतलब हम सेल बोल देते हैं, बट हाँ, एक्चुअली सेल हर एक तरह की, हर एक मतलब पूरा एक यूनिवर्स एक सेल का अलग ही है। अलग किसी ही भी है, सेल में देखेंगे तो अलग तरह का कुछ हो गया है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी अलग हो गई है। एग्जैक्टली अच्छा अच्छा। सही 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 बात बोले आप। तो इसमें क्या होता था कि वो जो जो लेयर उसके अंदर रहते थे, तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट जूस अगर आप बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, देखिएगा कि उतना क्लैरिटी नहीं होता है। तो यूजुअली आप घर पे जूस बनाइए और जो जूस आप खरीद के लाओ, तो उसमें देखो कि देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस इन दैट। इफ वो यू एकदम मतलब लगता है कि बस अभी मतलब हाँ, एकदम क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो ये रिफ्लेक्टिव। एंजाइम जो मैंने बनाया था वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म था जो येलोस्टोन, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, इट इज मेनली फेमस फॉर लाइक आपका जो वॉल्केनोज वगैरह होते हैं वहां पे बहुत सारे। तो अगर 2012 जो मूवी था उसमें अगर कोई उस मूवी को देखा होगा, तो वहां पे एक रेडियो जॉकी रहता है जो उस पार्क से बोलता है, तो दैट वाज द येलोस्टोन नेशनल पार्क। सो बेसिकली दैट येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक ऑर्गेनिज्म मिला था जो है क्लॉस्ट्रिडियम थर्मोसिलियम बोल के। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर में चीजें बना सकता था, मतलब ये ग्रो भी कर सकता था बहुत हाई टेम्परेचर में। ये क्या, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया। अच्छा, एक नए तरह का बैक्टीरिया मिला जो हाई टेम्परेचर में क्या ग्रो कर सकता था? ग्रो कर सकता है। तो अच्छा। ऑब्वियसली क्या होगा कि आप मैं जो एंजाइम इससे बनाया था, तो ये एंजाइम इसी का एक पार्ट था, मगर ये एक रिकॉम्बिनेंट एंजाइम था, मतलब इसको कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्लोन करके बनाया गया था। तो ये अच्छा। एंजाइम का प्रॉपर्टी ये था कि बहुत हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता था। तो ये फ्रूट जूस वगैरह जब क्लैरिफाई होता है, जब हम लोग इंडस्ट्री का बात करते हैं, तो यू व्हेन यू सेंड दैट पर्टिकुलर एंजाइम टू दैट प्रोसेस, तो उसमें टेम्परेचर 60 के अबव होता है हमेशा। तो कोई भी एंजाइम आप अगर डालोगे जो उसके नीचे टेम्परेचर है वो तो डिग्रेड कर जाएगा, तो वो काम हो ही नहीं पाएगा आपका कभी भी। ठीक है। तो ये एंजाइम का प्रोसेस मेनली ये था प्रोविजन की, हम लोग उसको मतलब 60 डिग्री के ऊपर वाला टेम्परेचर में ग्रो कराए और एंड प्रोसेस को हम लोग कर पाए इंडस्ट्री के लिए। तो इस मोटिव से इसको बनाया गया था। तो फिर क्या देखा गया कि हम लोग जब इस एंजाइम को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, तो ये देखा गया कि इस प्रोडक्ट का कुछ दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो और ये प्रोडक्ट बहुत छोटा प्रोडक्ट है, मतलब ये बहुत एकदम माइक्रॉन्स में प्रोडक्ट था, जिसको आपको मतलब एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है जिससे वो प्यूरिफाई किया जाता है। तो उससे वो प्यूरिफाइफिकेशन के बाद फिर हम लोग मैमिलियन टेस्ट सेल्स पे टेस्ट करना शुरू किए। तो आप बता रहे थे कि मैमेलियंस मतलब मैमल्स की सेल्स मैमल्स पे? के टेस्ट सेल्स पे। रैट वगैरह भी मैमल होगा, रैट? यस, रैट इज मैमल। अगर ये आपका मंकी वगैरह है, ये सारे के सारे चीजें भी मैमल्स है। बट हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डायरेक्टली सेल्स को मतलब वी यूज टू गेट द सेल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड देन हम लोग उस सेल्स को कल्चर करते थे। तो अगर कोलोन कैंसर वाला जो सेल था वो हम लोग कल्चर किए थे अपना लैब में। एक मतलब वहां पे एक रूम होता है जिसके अंदर आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और जिससे आप ये सारे के सारे जो सेल्स है उसको ग्रो कर सकते हैं। ये तो कैंसर सेल जैसे आप रखते हैं तो अपने में आप मल्टीप्लाई नहीं हो जाता? हाँ, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो उसको आपको फिर ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब ओह। दूसरे इसमें कल्चर्स में। जैसे आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो सेल तो मर नहीं गया, सेल जिंदा है कि नहीं है। उसके बाद व्हाट आर द मीडिया कॉम्पोजिशंस, वो आप सही से यूज कर रहे हो कि नहीं कर नहीं रहे तो हो। आपका फिर क्राइटेरिया क्या है कि सेल जिंदा है कि नहीं है? तो उसमें क्या होता है कि एक मीडिया होता है। तो आप वो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर सेल जिंदा है तो अच्छा खासा उसका एकदम आउटलाइन दिखेगा, और अगर वो अच्छा। मर गया है तो उसमें क्या होगा कि देयर विल बी लाइक डिजिटेशंस, वो सिकुड़ जाएगा ऐसे, मतलब उसका जो पानी वगैरह उसके अंदर है वो छोड़ देगा। तो यू कैन जस्ट लुक इनटू अंडर द माइक्रोस्कोप एंड डिटरमाइन कि ये सेल जिंदा है या मर गया है। ओके ओके। सो और क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स और जो ये सेल्स होता है ना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है कि ग्रोथ में। जैसे कैंसर सेल बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो हम्म। मैंने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए थे तो इसको मैंने टेस्ट किया था, जिसपे हम हाँ। लोगों को मिला था कि ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हम लोग बनाए थे, इट मेनली हेल्प्स यू टू लाइक रेजिस्ट द सेल्स फ्रॉम 77% ऑफ इस ग्रोथ। लाइक जो ग्रोथ पहले हो रहा था
उसका 77% तक कम ग्रोथ कर दिया था सेल्स का। नहीं तो इसके ऊपर फिर क्या कुछ बना है मेडिसिन वगैरह? नो, इसके ऊपर अभी तक ये जो रिसर्च है एक्चुअली ये नेचुरल मेडिसिन है। सो व्हाट वी सजेस्टेड इज दैट इफ यू कैन टेक लाइक आप जो माने कि संतरे होते हैं, संतरे का छिलका हम लोग फेंक देते हैं। हाँ। तो संतरे का छिलका मत फेंकिए, उसको ड्राई कीजिए, उसको पाउडर बनाइए और फिर आप अगर लेते रहते हो आपको कैंसर का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे। मतलब तो अगर क्या ये उसमें मिलता है, ये उसमें है क्या, वो जो आपका एंजाइम है उसमें आता है क्या? नहीं, ये एंजाइम से जो चीजें बनाया गया था, एंजाइम से एक चीज बनाया गया था जो विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द छिलका ऑफ योर लेमन, अच्छा एंड अच्छा। दैट यू कैन टेक एज अ पाउडर। If you take, then there is a chance that you can resist your cancer तो to first CSIR stage. लैब्स वगैरह तो इस पे फिर क्लिनिकल रिसर्च और ये सब करेंगी, हाँ, देखेंगी? एक्चुअली क्या है कि IIT गुवाहाटी में ये इसको लेके फर्दर रिसर्च हो रहा है, तो इसके ऊपर ओके जो मेरा जूनियर था उसने फर्दर इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो इसमें ओके थ्री अराउंड 3 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया है, तो ओके। जिसको लेके मतलब दिस इज अ पैन IIT प्रोजेक्ट जिसमें IIT रुड़की, IIT बॉम्बे एंड IIT गुवाहाटी तीनों IIT एक साथ कोलैबोरेट करके एक इस प्रोजेक्ट को मतलब फर्दर टेक ऑन कर रहे हैं। ओके ओके। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। तो ये तो हो गई फार्माकोलॉजी की बात, हो गई हमने रिसर्च में। तो सर ये जो आप बता रहे थे कि इंडिया में ये सब लेवल पे रिसर्च है इस वक्त, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड हम देयर ये इज सब काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब मानिए कि जिसके अंडर आप रिसर्च कर रहे हो, so they have a lot of collaborations like also in foreign countries. So if your things are not being done here, they send those samples outside. So whatever the मतलब इंडिया में अभी तक 100% काम ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हर एक के पास कोलैबोरेटर्स अवेलेबल है, मगर इसमें ये होता है कि आप अगर चाहिए तो यू कैन डू दैट, यू कैन सर मैं जैसे कोलैबोरेट। इसको फिर से थोड़ा रिफ्रेज इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। तो हाँ हम जब रिसर्च करना सोचते थे तो वी यूज्ड टू थिंक कि यार बहुत फंस जाएंगे, हाँ, क्योंकि हमारा ना पैसा नहीं आएगा, तो हम काम कैसे करेंगे, श्योर गाइड श्योर, नहीं हमें करेगा, हो सकता है गाइड को ही ना आता हो, हाँ और हाँ हाँ, फिर हम एकदम से बहुत एक्साइटेड होंगे, मे बी वी आर थ्रू, क्योंकि बच्चे होते हैं तो श्योर एक्साइटमेंट है, श्योर, क्यूरियोसिटी है, हमें देखना है। तो वो कहेंगे कि क्या बेकार है, पैसा नहीं देंगे, एंड बहुत मतलब एक मोनोटनस या टीडियस रहेगा। ये श्योर जिस श्योर, लेवल पे हम सोचते थे वो आई थिंक सो आपके भी बैरोमीटर में ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होगा। एग्जैक्टली। करेंटली कहाँ पर है या आप कितना, मतलब आप थोड़ा आइडिया देंगे मेरे को? देखिए, एक चीज तो ये है कि अगर रिसर्च का आप बात बोले इंडिया में एटलीस्ट फ्रॉम द सिनेरियोस, सो इसमें अभी का सिनेरियो काफी चेंज है, बहुत डायनामिक। गाइड्स आर मच मोर डायनामिक देन व्हाट दे वुड हैव बीन लाइक जब मैं PhD करता था उसी टाइम पे जो गाइड का डायनामिसिटी था, अभी शायद उसके बहुत ज्यादा डायनामिक है। एंड बहुत सारे मतलब अभी जो फंडिंग है उसका उसको लेके भी एक कि बाहर से बहुत लोग अपना PhD वगैरह करके वापस आ रहे हैं, तो दे आर वेरी मच डायनामिक इन दोस पर्टिकुलर सेंस। तो इसमें ये सोचने का जरूरत नहीं है, और फंडिंग का अवेलेबिलिटी काफी है, तो आपको सही लैब चुनना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा चीज ये है कि PhD इज योर्स, द रिसर्च इज योर्स, सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट। सो मैं ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब PhD में जाओगे तब करोगे, इवन फ्रॉम द BTech लेवल इफ यू स्टार्ट लाइक yes, it is my project, it is my thing and I want to contribute in that particular sense, so that is very important, like ये सारे के सारे चीजें दिमाग में पहले से अगर किसी का होगा तो ऑटोमेटिकली रिसर्च मेरे और को नहीं लगता कि अगर मैं ये मान लूं अभी के लिए कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आपने बोला आपकी टेक्निक्स हैं फिर भी महंगी हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कल्चर आपको करना है, आपको मशीन्स अच्छी खासी लेनी है एग्जैक्टली, इमेजिंग वगैरह बहुत के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप पे आए। हाँ हाँ एक्चुअली, हाँ, या तो या अगर हम चाहें कि ये भाई नहीं करना चाहते तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक की तरफ चले जाएं, वहां पे इन्वेस्टमेंट जीरो ही या है, श्योर ऑलमोस्ट श्योर नॉलेज श्योर नॉलेज बेस्ड है पूरा, श्योर श्योर श्योर, तो हम पर पीएचडी एट में द चले जाएंगे। स्टार्टिंग मतलब अगर अगर हम लोग देखें कि 11th एंड 12th का बच्चा जब आ रहा है एंड देन उसको, या ठीक है अब मैंने मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया या कुछ ऐसे टाइप का, एंड हाँ फिर आई वांट नॉट ओनली फॉर मेडिकल बिकॉज वी गेट स्टूडेंट फ्रॉम हु डोंट हैव अ बायोलॉजी बैकग्राउंड आल्सो, ऐसे स्टूडेंट भी या अपने पास है। तो उसमें क्या होता है कि क्या कैसे आप चूज करोगे, यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं ना मैं बोल रहा हूँ कि NIT यूनिवर्सिटी को चूज करिए, ना मैं बोल रहा हूँ MIT को चूज करिए, कोई भी मतलब व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया आउट देयर। या देखिए, if you have like if what you have understood from all my discussions is that it is very much a lab based system, okay? या So each and everything you need to understand very properly कि कैसे चीजें हो रहा है, कैसे मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या तो मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो मैं क्या क्या वहां पे कर सकता हूँ, क्या मैं तो मेरे को अलग कहीं पे अलग दिखना है ये।
तो ये चीज है कि when you are choosing a university, the main thing is that for biotech the labs are very important. Okay, so you should choose where you have a very good lab, because like I am not just telling like that, but when I joined NIIT University and when I set up the labs which was previously also present, so I found there is a very enriched lab. Like I have been into many IITs, I have been into many NITs which are there, and I can bet on that, that whatever the facility which we have at NIIT University in the labs, at least in the biotech sector, yeah, in all obviously in other streams also there is a very enriched lab. So that is also not present in some of the NITs. आप NIT सिलचर चले जाइए, आप NIT अगरतला चले जाइए, जहाँ पे, और फिर आप बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे, आप NIT जालंधर चले जाइए, तो वहां पे जितना फैसिलिटी है, आप NIT यूनिवर्सिटी में आगे देखिए कि मतलब हम लोग का जो लैब इतना इनरिच लैब है, एंड इट हैज बीन हाईली एक्लेम्ड नॉट ओनली बाय अस बट ऑल्सो देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होता है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो एमिटी यूनिवर्सिटी और मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन से जितना भी लोग वहां पे आए हैं, so they have all told that yeah, you have a very good lab facility which is there. And even we had visitors from like the University of Brisbane, and they also like appreciated. There are from visitors from China who also appreciated that yes, the lab facility which you have, at least at the BTech level, it is very very enriched. And PhD level obviously there, because so why it is enriched, because we have programs in BTech, we have the PhD program also, so everything is running hand in hand. एंड ईच एंड एवरी कोर्स आपको अगर फूड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, फूड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको आपको इम्प्लाई नहीं कर सकते हो कैसे बनाना है आपको लैब में, तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो द मेन थिंग इज दैट इज द यूएसपी। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट दैट इफ 11th and 12th students are looking for biotechnology, they should look for such kind of sectors where we have like a very good laboratory facility. That is very important. Yes, that's so true, because lab तो चाहिए ही। सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट से कि जैसे मैकेनिकल स्टूडेंट ज्यादातर अगर आप पूछेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ ड्रीम एसोसिएटेड टू अ करियर, कि मैकेनिकल वाले बोलेंगे कि हमको तो भाई कोर जॉब मिल जाए, दैट इज माय लास्ट। कंप्यूटर साइंस वाले बोलेंगे कि हम अमेजोन में चले जाएं। आर्ट्स वाले किसी को कहेगा नहीं मुझे आईएएस बनना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट इज द रियलिस्टिक करंट ड्रीम, अभी क्या चल रहा है, क्या कॉमन है जो सब बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर एमिंग फॉर कि यार ये हो सकता है, दिस इज द नेक्स्ट लेवल थिंग? Okay, so see, as I have mentioned before, that there is a lot of opportunity which is open. Okay, so you can't concentrate yourself into a single section. तो ये आपको अभी समझ में आएगा ही नहीं। मैं क्लीनली बोल रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए आपको समझ में आएगा ही नहीं। कैसे समझ में आएगा ये, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप फर्स्ट ईयर में कॉमन कोर्सेस पढ़ोगे कि व्हाट आर how engineering is done, so that is the basic thing. You have also learned, I have also learned. Yes. So what is the basic of engineering, how you will do the engineering and all the stuffs. इसमें electronics भी पढ़ना पड़ेगा, mathematics भी रहेगा associated, chemistry भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर पे जो बेस आपका बिल्ट हो गया इंजीनियरिंग का, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तब आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। कोर सब्जेक्ट्स होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन पिलर्स है, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर आपका फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या होगा, यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यू विल बी गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस की किसमें क्या होता है। अगर अब मैं इफ आई वांट टू परस्यू अ ड्रीम विद फूड इन अ फूड कंपनी, देन व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आर द सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू परफॉर्म, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। तो उसी बेसिस पे क्या होता है कि थर्ड ईयर में बच्चे जब जाते हैं तो उसको मतलब ये एज अ नॉलेज कि यस व्हाट आई शुड डू, एट व्हाट इज द मेन थिंग व्हिच आई हैव एन इंक्लिनेशन टू। तो उसमें क्या होगा कि ये जो सारे के सारे बच्चे हैं, तो थर्ड ईयर में दे कैन चूज स्पेशलाइजेशंस। आपको स्पेशलाइजेशन फूड पे करना है, आपको स्पेशलाइजेशन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे करना है, आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे करना है, एनवायरमेंटल पे करना है। सो दैट इज द मेन गोल सेट। तो आपको वो स्पेशलाइजेशन का आप एक चैनलाइज हो गए, तो स्पेशलाइजेशन जब आप करके बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनीज आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है। या कोई लैब आपको लेना चाहता है तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कितना कितना आपका नॉलेज है ये बताइए। और लैब्स प्राइवेट भी लैब्स तो होंगे, कितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा है। तो व्हाट आई वाज रेफरिंग की देख, जैसे अभी एक कुछ दिन पहले ही एक कंपनी से मेरे जैसे बात हो रहा था, तो उसमें वो लोग ये अभी प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में दिस इज द गोइंग टू बी लॉन्च एंड दैट विल बी अ ह्यूज सक्सेस इफ इट इज बीइंग डन। यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा बहुत इसका रिसर्च हो रहा है कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस करते थे हम लोग करेंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन से केमिकल बनाएंगे।
So that is the next big thing which is coming up. So you know that how large that नहीं तो opportunity क्या ये is. मनी सेविंग है क्या? इट इज नॉट ओनली मनी सेविंग, अगर फार्मास्यूटिकल में देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें बहुत मतलब जो साइड प्रोडक्ट्स होता है, साइड इफेक्ट्स कम कर देंगे, टॉक्सिसिटी कम कर देंगे। अच्छा, तो अभी हम केमिकल से बनाते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल से, एलोपैथिक है, तो अब हम वही एलोपैथी मेडिसिन अब हम कल्टीवेट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली सर किसी दिन स्पाइडरमैन, सुपरमैन कुछ बन जाएगा ये सब में, क्योंकि आपके सैंपल्स इतने हो गए, थोड़ा इधर उधर हुआ किसी को गलत दवाई पहुंच गई, ये चांसेस है कि आप स्पाइडरमैन बनेंगे कभी किसी ना किसी दिन, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो बहुत सही चीजें हैं कुछ कुछ, तो मतलब इतने ज्यादा डीप में भी है हमारी रिसर्च इंडिया में, क्योंकि कंपनीज आर लुकिंग टुवर्ड्स सेविंग सम सॉर्ट ऑफ अ मनी, sure. improving the processes and taking it towards more natural, ये भी एक चीजें हैं। Exactly. Okay. बहुत and थोड़ी हाई लेवल भी है कि मतलब हर एक चीज को बहुत तरह से देखा जा रहा है, बहुत मतलब डाइवर्सिटी में। yes. ओके सर, तो ये तो काफी ज्यादा है। हम और सर, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग केमिकल के साथ भी ओवरलैप्ड हैं, मतलब क्योंकि कहीं जगह मैंने देखा है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है, तो ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कैसे फिर डिफरेंट है? ये सब्जेक्ट एक्चुअली मैं ही पढ़ाता हूँ, अगर ये जो है जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज मेनली डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक, माने कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल बनाना, अगर कोई केमिकल स्पीसीज को हम लोग बनाना चाहते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब ट्रांसफरिंग, तो मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, दैट इज व्हाट इट इज द मेन अंडरलाइन थिंग। तो केमिकल जब हम बना रहे हैं तो उसमें कौन बनाएगा केमिकल? एक ऑर्गेनिज्म अगर बना रहा है तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें तो होगा जिससे वो बना पाएगा, तो उसमें रोल प्ले करता है एंजाइम्स, और एंजाइम्स होते हैं बायोकैटालिसिस। आप अगर आप 11-12 का केमिस्ट्री सोच रहे होंगे अभी, तो उसमें आपको पता होगा कि कैटालिसिस बोल के एक चीज होता था, उसमें कैटालिस्ट काम करता था जो एक चीज को दूसरे ए को बी में कन्वर्ट करता था और कैटालिस्ट बीच में रहता था। तो ये एंजाइम यही काम करता है जो उसको ए से बी में कन्वर्ट करता है, but with the help of the biological species. So that is what biochemical engineering, though biochemical engineering is like there are different type of reactors जिसमें reactions होते हैं, तो ये सारे डिजाइन होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म यू नीड टू ग्रो, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस यू नीड टू फॉलो, एंड यू नीड द प्रोडक्शन। सो डिपेंडिंग ऑन दिस थ्री एस्पेक्ट, मीथेन गैस बनाते हैं हम लोग, तो उसमें बायोकेमिकल रहेगा क्या ये? क्योंकि वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि कितना सही है, आप डाल दो। और जैसे आप गोबर गैस प्लांट जो है वो तो मीथेन ही बनाता है, तो उसमें आप गोबर गैस गोबर डाल रहे हो और वहां पे क्या ग्रो कर रहे हो? वहां पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स फिर उसको कन्वर्ट करके मीथेन बना रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। तो क्या ऐसे प्लांट्स हैं कहीं किसी सोसाइटीज में जहां ये, आई थिंक सो बहुत जगह ये लोग करते हैं, बहुत जगह पे है, बहुत जगह करते हैं। ये तो काफी इनोवेटिव है। अभी आप कैसे उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाओगे वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, या तो कोई आप दूसरा कुछ टेक्निक यूज कर रहे हो। अभी आप एक जस्ट थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लीजिए कि अभी जो फिशिंग होता है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस माइक्रोपोनिक्स व्हिच इज देयर, सो दिस इज बायोपोनिक्स। अभी ऑर्गेनिज्म को डाल के मछली को चारा खिलाया नहीं जाता है, अभी सिर्फ ऑर्गेनिज्म खिलाया जाता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह खिला दिया जाता है, और उसी से वो ग्रो बहुत जल्दी ग्रो करता है। मछली ग्रो करता है, हाँ, मतलब एक तरह से प्रोटीन पाउडर टाइप का है, प्रोटीन पाउडर टाइप, एग्जैक्टली खाया बड़े हो गए। ओके, तो मतलब ये तो मतलब फिशरीज में भी मतलब एप्लीकेशन है। आप फिशरीज में भी प्रोजेक्ट करिए, सेफ एकदम होगा। क्योंकि उस दिन एनआईटी के ही प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईटी, मतलब आपकी एनआईटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और वो आईटी खड़गपुर में थे, आईटी। तो वो बताए थे कॉग्निटिव मॉडलिंग। वो कह रहे थे कि हम ब्रेन में मतलब आर्टिफिशियली ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं कि जब कोई काम कर रहा है तो कौन सा ब्रेन में हो रहा है, और सब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो ये दोनों आप दोनों मिल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज्यादा ये, क्योंकि हर चीज इतना मतलब ये सब पॉसिबल है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, यू कैन रियली थिंक अबाउट इट एंड वी सी इट इन मूवीज आल्सो। but आप लोग कैसे कराते हैं, मतलब and some projects which you from your university people have done or students have done? Yes, there are a lot of projects which are there. So basically अगर यूनिवर्सिटी का जो बायोटेक का करिकुलम है उसमें there are 3 projects which are there. So it is being offered
like in the third year we start offering the project, because the students have the mindset like they should know something that you do in the lab and all. First of all, each and every course which we offer is connected to the lab. So you spend 3 hours in a lecture session and you spend 2 hours in each and every week for the lab, because आप कोई भी फूड का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वो भी आप सीख रहे हो, बायोकेमिकल का कर रहे हो तो वो भी सीख रहे हो, इंडस्ट्रियल का कर रहे हो वो भी सीख रहे हो। तो सारे के सारे प्रैक्टिकल आप हैंड्स ऑन वाला जो चीज है वो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि ये सारे के सारी चीजें होना चाहिए। एंड आई सजेस्ट दैट ईच एंड एवरी प्लेस दैट शुड बी द मॉडल, लाइक यू शुड बी लुकिंग इनटू द हैंड्स ऑन फर्स्ट। ओके, एंड नाउ उसके बाद अगर हम लोग इस पे आए कि हाँ जो ये अपना जो आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट। लाइक आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपके कोई, मैं दोनों ही, बिकॉज़ अच्छा आई थिंक हाँ, सो दिस आई विल बी, गॉट इट, या गॉट, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई गॉट इट। ओके, सो उसमें ये है कि तो प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं तो ये कैपस्टोन 1 एक प्रोजेक्ट होता है, फिर उसके बाद R&D प्रोजेक्ट होता है और कैपस्टोन 2 होता है। सो ये अलग अलग कैसा है, तो फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट होता है उस पर आप सिखाया जाता है कि आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे, आप कैसे उस रिसर्च प्रॉब्लम को मतलब कैरी आउट करोगे, वो सारे के सारे प्लानिंग कैसे करोगे, और उसके बेसिस पे अगर आप खुद अपना एक प्रोजेक्ट लिखना चाहते हो या तो कोई फंडिंग के लिए पूछना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो दैट इज द होल थिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, द सेकंड प्रोजेक्ट इज entirely research based, so you do the research whatever you conceptualize in the first part, you do the research in the second part। okay, so these are all 6 months projects which are there, they are all interconnected with each other। और इसमें आपको एक फैकल्टी मेंटर असाइन कर दिया जाता है, अगर वहां पे कोई इंडस्ट्री पार्टनर रहता है तो इंडस्ट्री से भी एक फैकल्टी मेंटर आपको गाइड करते हैं कि व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर and how you can just make up your project। So second project is mainly on the research and development। The third one is basically a project which helps you to make your product sellable। Like you can be an entrepreneur out there, तो आपको अगर आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है तो उसको आप अगर सेल करना चाहते हो, उसका पेटेंटिंग करना पड़ेगा, IPR इश्यूज है, ये सारे के सारी चीजों को आपको फिर टेक केयर करना, कैसे फाइनेंस आएगा, तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आउट देयर। तो ये आप सिखाते हैं, yes ये yes सिखाते हैं, yes 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 दिस इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। yeah, that is a part of the curriculum। so that you know that how you need to write your like proposals for your business models। so there is an entrepreneurship cell which is also there, which is there in the university, and it mainly, and university is very much fond of financing those projects which are really very good। तो यूनिवर्सिटी खुद फंड करते हैं, एंड बहुत सारे कंपनीज यूनिवर्सिटी से ही इंक्यूबेट होके बाहर गया है। So there are different funding agencies, like there is NASSCOM is one of the funding agencies. There are other funding agencies which are like the 𝗧𝗏, that is Science and Engineering Research Board, which is there। So all these peoples actually come together under the CIC to fund those projects। and तो ये तीनों प्रोजेक्ट होता है जहां से हम लोग स्टूडेंट को मतलब गाइड करते हैं। एंड फर्दर फिर उसके बाद वाला जो सेमेस्टर होता है, जैसे फाइनल जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें तो स्टूडेंट कैंपस में ही नहीं रहता है, दे गो फॉर अ इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो अगर दो टाइप का इंडस्ट्री प्रैक्टिस होता है, एक इंडस्ट्री में जाके काम करना और एक होता है कोई रिसर्च लैब में जाके काम करना। तो जो रिसर्च करना चाहता है फर्दर, वी सजेस्ट दैट यू गो टू अ रिसर्च लैब। जैसे NCL पुणे में बहुत सारे लोग, हम लोग IISc बैंगलोर में एक लड़की थी जो गई थी, एंड शी गॉट अ PhD अपॉर्चुनिटी देयर, so directly after her like the BTech program। so and then NCCS पुणे में बहुत सारे लोग जाते हैं, NCCS एंड देन NCCS पुणे, NCL पुणे जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वहां पे जाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर आप इंडस्ट्री का तरफ देखें तो बायोकॉन में बहुत लोग गए हैं, यहाँ आपका जो स्टेलस बायोफार्मा में बहुत लोग, ग्लैक्सोस्मिथ भी हो सकता है वो ऐसे, या ग्लैक्सोस्मिथ जैसे वो आपका ये था, क्या नाम था उसका, एक हैदराबाद अहमदाबाद बेस्ड कंपनी था, इट वाज बेसिकली पैनिशिया बायोटेक, आई थिंक सो, यस पैनिशिया बायोटेक, जिसमें लोग गए। तो वहां पे जाके वो सीखता है कि व्हाट दे वांट टू, like how the things are being done in the industry। so there is two bifurcations। so you go to the industry, you learn there, and if you perform good, obviously you will get an opportunity from there। so two recent development just I wanted to mention। तो एक अपना जो लड़की थी वो she actually went to NCCS Pune, which is there, and where she actually worked with another very unknown organism which is there। और वो फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन किया एक टोटली नोबल ऑर्गेनिज्म जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है। तो इट वाज मेनली आइसोलेटेड फ्रॉम वन ऑफ दिस लेक्स व्हिच इज देयर इन राजस्थान। सो इट इज बेसिकली
वेरी मतलब राजस्थान में एक लेक है जहाँ से ये आइसोलेट किया गया है जो ऑर्गेनिज्म तो है। वो पानी का टेम्परेचर क्या रहा होगा? बहुत 40 हाई रहा डिग्री? होगा नहीं, 40 अगर डिग्री? 40 डिग्री पे है तो उसमें उसमें मानिए कि जब हीट होता है तो ऑटोमेटिकली पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ तो हाँ। वो उस टेम्परेचर में भी वो ग्रो कर ऑन एंड वो सैंड में भी पाया गया है, जो अपना रेगिस्तान अच्छा का अच्छा सैंड अच्छा। है उसमें भी पाया गया है। अच्छा, तो अब इसकी कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, इसका तो आपके अपने कैरेक्टराइजेशन उन्होंने किया था। पैरामीटर्स होंगे, उसका हाँ, आप तो शी कैरेक्टराइज कर रहे एक्चुअली होंगे। गॉट एन हाईली acclaimed in newspapers and all. ओ, Recently this news has came, and there were like last year there was one of our the student who was mainly working in the bioinformatics area, and she हाँ। actually went for a presentation in Malaysia, and she has won the first best paper prize, like सर, best ये first आप position लोग prize. जो कह रहे हैं अभी, जैसे मेरे एकदम से दिमाग में आया, तो अभी तो ये सब फिर डिफेंस में भी आ सकता है, क्योंकि आप मटेरियल्स को, अभी तो मटेरियल दे रहे हैं एनिमेटेड, ठीक है, अब हाँ, आप कुछ उस पे करिए और वो उसी को सिलने लग जाए, बिकॉज तो ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना, जैसे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो डीआरडीओ है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो दे फंड ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बायो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होता है, तो डीआरडीओ डायरेक्टली फंडिंग करता है। तो हाँ बहुत जगह पे जैसे हम लोग सीएसआई लैब के बात बोलते हैं, तो डीआरडीओ लैब्स है जहाँ पे हाँ। डायरेक्टली आपका ये बायो सिस्टम्स पे ही काम हो रहा है। जैसे अभी बायोसिस्टम्स। इसरो में बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि हम लोग एक मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह को स्पेस में सेंड करके फिर वहां पे मॉड्यूलेट करना चाहते हैं कि कैसे कैसे उसका ग्रोथ वगैरह पैरामीटर्स है, सो दैट वी कैन आल्सो लुक इनटू। तो ये तो कुछ काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा। सर, मे बी वी आर मूविंग नाउ टुवर्ड्स द एंड, मे बी वी विल टेक वन और टू क्वेश्चंस। स्वर्णिम जैन, आपको अगर बायोटेक एनआईटी वारंगल में मिल रहा है, तो वी वुड सजेस्ट कि आप ले लीजिए, आपने पूरी बात सर की सुनी होगी, तो वी आर रियली, मतलब आप अगर डरते, अगर सही में इंटरेस्ट है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, बिकॉज जो सर जैसे पूरा बता रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन श्योर इंडिया, श्योर श्योर and श्योर। you just have to be interested, and then once you go, and अब teaching इतनी अच्छी लाइन हो गई है कि if you are good enough, there is no stopping. सर, बस हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर, उसमें दो पार्ट में साथ में कर लेता हूँ, कि अगर हम ग्लोबली बात करें, तो डू यू थिंक कि बायोटेक अभी कमर्शियल एस्पेक्ट आएगा, या फिर यू थिंक कि बायोटेक अब, इट्स लाइक उसकी अब ग्रोथ नहीं होगी, या एप्लीकेशन नहीं है ऑन द वर्ल्ड लेवल? एंड सेकेंडली, तो अब उसका प्रैक्टिकल है कि क्या पोस्ट डॉग्स बहुत अवेलेबल हैं? कैन वी हैव अ करियर पाथ इन दिस, वेयर बिकॉज इट्स सच अ डेवलपिंग फील्ड, एंड बिकॉज लाइक यू आर सेइंग देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी स्टडीड करेंटली, एंड अभी तो हमने मतलब टच भी नहीं किया, अभी तो हम एनिमल हस्बेंड्री में गए नहीं है, उनकी मेडिसिन भी नहीं गए हैं, ये तो मतलब हम शायद 1/5 हुआ होगा, तो अभी एग्जैक्टली। इतना इतना सारा और बचा है फील्ड, बिकॉज आई नेवर न्यू कि एनिमल हस्बेंड्री में एआई यूज करके, तो उनकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी, एंड देन दे आर ट्राइंग टू लुक इनटू इट कि भाई कैसे हम दूध का प्रोडक्शन ज्यादा करें, तो पूरा एनिमल हस्बेंड्री डेटा कलेक्ट हो रहा है, मे बी बिहेवियरल लेवल पर हम उतना अंदर डीप ना जाएं और ऊपर से ही डेटा कलेक्ट कर लें, तो दिस आई थॉट दिस इज टू मच। तो ये दोनों मेरे क्वेश्चन है कि क्या हम लोग का जो अंदर का डर है, आई एम नॉट सेइंग आपके अंदर, बट बाकी लोग जो लेने वाले, तो लगता है ऐसा तो नहीं कहीं बायोटेक बायोटेक इंडिया में डेड फील्ड हो जाए, कई ओके। ऐसी फील्ड है जो बस वैसी हो गई, और अगर डेट फील्ड हो जाती, तो क्या ऐसा मेरा करियर हो सकता है कि मैं डिफरेंट जगह रिसर्च करता रहूं, एंड लाइक 10 years पोस्ट डॉक कर लूं, एंड आई कम बैक एंड मे बी आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर, 1.5 lakh 2 lakhs, तो यस, ये दोनों था। it's a good question. So first of all, if you talk about to the world scenario and India, so yes, अगर इंडिया को सही से देखा जाए तो वर्ल्ड में क्या होता है, मतलब वर्ल्ड में रिसर्च और जो जो प्रोडक्शन वो थोड़ा डिफरेंटली चलता है। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च लैब रिसर्च करता है और वो रिसर्च आपका इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। So that is the whole scenario which we have. Obviously, industry is also involved in research, but the maximum thing comes from the research lab. तो इसीलिए कोई अगर ये पोस्ट किया है कि जो पोस्ट डॉक का अपॉर्चुनिटीज है, yes, there is a huge opportunity which is there, क्योंकि बहुत सारे फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आई नो guy from Pakistan who is having like his age is around like 55 60 around 60, and he is still a postdoc. He is still a postdoc. So, and he's a senior level postdoc, means he works in somebody's lab and he manages the whole lab, like that professor is having less amount of duties which is there, okay, and he get a very good pay package out there, and I personally met him when I once went to Portugal. That was one thing. So
तो ये बात है कि और अगर तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर कोई दूसरा कैरियर पाथ में जाना चाहते हो तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसे भी चीजें होता है कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सीखते हैं, तो एक टाइम पे आपको अगर लगे कि हाँ यस आई एम नॉट ग्रोइंग मे बी, so chances are very less because we are just at the starting. We are just at the starting, and we we will might be delay it, but there is going to be. Yeah, but it is not, it will not be delayed, because the thing is that whatever the scenario is now, it has started and it will now grow. So we globally also it has started and it will grow, because and I think so after COVID तो ये push जो चाहिए था वो बहुत ज्यादा मिल गया है, because now at least nothing can be overlooked. श्योर। तो वही है कि अगर आप मतलब कैरियर पाथ में, जैसे मैं बता रहा था कि आप यू अंडरस्टैंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक दिस like bioinformatics softwares, there are different type of the C++ programmings which are being done. Okay, so in those cases, am I audible? Yes, Sagar, am I audible? I think Sagar's internet. Okay, I thought that I got free. Sorry for that. Yeah, no, I think Sagar's internet. Yeah, so would we wait for him to come back? Yes, he's the moderator out there. He should be. Yeah. Let's wait for a couple of minutes, or then I'll pause Sagar. Yeah, sure, no problem. That's absolutely okay. Yeah, I think he kind of paused up there. Yeah, sure. So so let's let him come back. Yes, or yes, sir. Sure, sir. Go ahead. Yeah. So what I was mainly mentioning is that, like, if you talk about like this the career prospects which are, so it is basically starting. So this is, we are at the end of this, like the staircase which is there, and each and every person globally also, if you look into the thing, so they are also in the starting phase, and yes, it will grow for the period, and obviously after this particular pandemic and all, you understand that there will be a huge amount of demand which will be there for this particular like in field of biotechnology. So I would in the nutshell, I would suggest that if you are interested, and also NIIT University is a very good place from the biotech prospect, and you can just explore our lab websites and our lab videos. And the main thing what we peoples have started out is that there is a version of NUX. Okay, so it is just very common to that of the MITx and the Coursera and all this. This is the online platform where we are in free of cost, we are delivering some of the courses which are there, because it is just in the growing phase. So we need to like people know about the things, so how we have started it. So that is what the main thing which I wanted to mention. So if you want, and if you are interested in any of these courses, you can just come and join. So it will be very helpful for you people, that you can understand that what kind of educations actually NIIT University is providing, and from different courses from the biotechnology prospect, which can also be taken care in this. So, sir, one quick question here. When you're talking about NUX, like MITx and Coursera and all of these, universities or platforms give you a certificate, or give you an option of a certificate towards the end. Does NUX also provide that? So these are the short-term courses which has been launched in this was launched 2 months back. So currently, from the next semester onwards, like from the January onwards, we are planning for certificate courses, and definitely there will be a certificate course which will be starting in this process. So right now the courses are free of cost, so we are not actually providing any certificate for them. But obviously you can, like, if you get registered and all, you will know, and you have the flavor of that, how the courses are being run, then how things are being taught, and what are the flavors of biotechnology or computer science or ECE and MBA, IMBA courses. All these things can be understood better in this. But certificate courses are not right now there, but they will be coming up soon. We have already planned for them. Yeah. That's perfect, sir. So sorry about that. Sagar just messaged me that his internet just passed out there. Okay. But
one question that towards the end that we wanted to ask, and even Sanjay sir is here, actually from both of you. When you were 16 to 20 years old, अगर आपको कोई अपने आप को एक advice देनी होती, so what would your advice be to you? Okay. So there, I will talk from the prospects of where there is a huge number of students who are there, who have tried for the any NET exam which is there. Maybe they have not cleared those, or the students who are actually like thinking of choosing a career path out there. So first of all is that for the students who have appeared for the NET and maybe they were not lucky this time out there, so I would suggest that don't waste your time much. That's the main thing, because time is very precious. Okay. Yes, if you have a urge to do medical and all, yes, you can go for that. But the thing is that biotechnology can be a very good career option, not only for you people who have biology in 11th and 12th, but also for people who don't have biology in 11th, 12th, 12th. It is a very interesting field, and you can join such kind of courses, but make sure always that you have the right labs which are present. There are live, like the proper courses which are there, and also specializations, because without specializations nowadays, a student who is graduating out, the chances of getting a job is very less, because when once you get the specializations, you will be there. So for and all the people who are there, I would suggest that choose a BTech course rather than going for a BSc or MSc courses after that, because if when you do your BTech, you are directly equivalent to an MSc, and you can directly go for PhDs, and you can go for other options also. You are equivalent in the industry also. You are treated equivalent to that of the masters who are there. So that is what the main USP of the thing is, that please choose a BTech course that I personally suggest, and whatever be the subjects, but it is basically that thing which you have to think of, and we have to choose. And finally, like one message is there is that don't waste, like you can think of another year, but please get enrolled into some courses. That is very important. And obviously I think Sanjay can mainly focus on that, and then he can take forward. Yes, Sanjay, over to you. Yeah, absolutely. And thank you so much, Soumyadeep sir, because I think that is very important when people don't think about their plan B in their careers. Yeah. Because सब लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि okay, अगर ये नहीं मिला, I'll try again next year. I'll keep on trying. That can go on for, let's say, 2 years, but what about that? You're wasting your time just figuring out, okay, I'll live my life 2 years down the line. And also what happens is that the focus is somewhat being shifted. Like when you try for the second time, there is a back of the mind, you have a lot of pressure, and thinking of that pressure, your focus is being diverted. So that thing should be like, if you are enrolled into a course, then you can think of that, yes, why, whether I should sit for the exam one more time or not. That is your own choice. That's the whole. Yes. No, absolutely. Yes, Sanjay sir, thank you so much for being here. And Sanjay sir, we have a continuous partnership with them as well as NIIT. So this is not a paid partnership. One thing we want to be very, very clear. Soumyadeep sir, Sanjay sir, and we had so many amazing personalities from NIIT who have come here and shared on this platform their thoughts, their knowledge, their experiences. And all of these people have had so much experience, because when we talk to the dean of technology, he had 37 years of experience, and we talked about AI, ML, and all the scope in that industry. Not only us and not only Sagar, but also the students and parents out there are benefiting from this, because they are hearing from the professors who are actually going to teach them when they enter this university. So that's very, very important. So Sanjay sir, one question for you. When you were 16 to 20 years old, an advice that you would want to give yourself, because at this moment a lot of people are confused what to do in life, what would be the advice from you to them? Sure. Ma'am, it's a very important and a very valid question for from a point of view of a student. See, nowadays students, I'll talk on a track of NIIT and biotechnology only. So students who are aspiring their class 12, or those who have given their class 12, they moreover think in a straight one direction, that I want to go for NIIT first. I want to check out NIIT. So Yeah. students, you have to understand there are 13 lakh plus aspirants who are going for NIIT every year. And Mm-hmm. nationally, if you go through,
including all caste quota, including MBBS, BDS, all sort of medical seats. There are approx 78,000 seats nationally, including government, private, everything. So you will have to understand, if you are not into that top-notch ladder of 1 or 2% of the student, it is going to be difficult for you to be in that competition. So when you are preparing for your NEET, you are appearing for your mock test, you are able to evaluate yourself that where you are. So students who have a plan that I want to drop 1 year, I'll not say that don't drop, but being checking your result, that if I have got 400 right now or 380 right now, if I work one more year, there is a chance I can make it 420, Yeah. 430. But I'm getting 100, 150, and there I want to drop 1 year. That next year some magic will happen. I'll reach on 450 or 420, and I'll be landing in a medical college. That is not going to happen. So Mm-hmm. be on the track and understand one more thing. Like last 1 hour, Dr. Somadip sir has already given you a very good understanding. A doctor is a person who prescribes medicines to you. As a layman, if I say, a biotechnologist is a person who is working behind the scenes and working on each and every aspect of medicine, each and every aspect of the food that you are consuming. So a biotechnologist is a person who is having involvement in your day-to-day life. So a doctor is just there to prescribe the medicine, whereas the medicine that you are going to procure, a biotechnologist is having a strong role in that. So it's a wide industry. It's a very, very, very wide industry where the opportunities day by day it is increasing. And rightly said, after this COVID, we are hearing here and there on every news channel everywhere across the globe that biotechnologists are the people where we are completely dependent upon for the medicines, for the vaccinations, for everything. So this is going to be a specialization. Like in biotechnology, specializations are there, like food biotechnology, plant biotechnology, environmental biotechnology. So there are 5 to 6 specialization, industrial biotechnology. A student is having different options, different career opportunities in biotechnology. And Mm-hmm. one more myth for students, that for biotechnology only physics, chemistry, and bio students can go. No, it is not like that. A student coming from physics, chemistry, and mathematics background are also doing very good. They are also doing excellent in biotechnology. Like bioinformatics, if I talk of, especially mathematics is having a very key important role in that. So, Okay. dear students, as I could have been on your place, I could have first evaluated where I rate myself, where I am currently, because every day of your life, every year of your life is very important. So, don't waste your 1 year. Think and evaluate smartly, and then you can take the call. So, my best wishes to all of you. Thank you so much, sir. And when deciding the college, I think Sanjay sir put it very, very nicely. One, it is very important to have a plan B in your life. And second, when you're evaluating a college, don't only look at the rankings of that college, look at the faculty, look at the course, look at the prospects of the course, look at the cohort. Who are you going to study with? Who are your peers? Where is it located? What kind of cultural exposure you are going to get? What kind of co-curricular exposure you are going to get? How can you build your profile? How, like, if you're going into biotech, chemistry, all of these, what kind of labs and research facilities are there? Research on your professors, and that's why we are bringing such amazing professors. Like when I research 𝗏𝗍𝗍 Chakraborty, the kind of research that sir has done, it kind of proves that NIIT has put in a lot of effort to recruit the right professors and the right teachers to come to their university and teach. So when you are looking at the universities, please don't only look at the ranks, look at the other variable aspects also, which are very, very, very important when you are deciding for your future growth as well as your job prospects. So thank you so much, 𝗏𝗍𝗍 sir and Sanjay sir, for coming to this platform. Any closing words? Yeah, so my best wishes for all the students who are listening to you and us for the last 1 hour. And also, I would suggest that I wish you peoples grow a lot. Career Cool is doing a very good job. You and Sagar, and yeah, so that's all. That's all. And I find I hope that I see some of the faces who have watched me on this YouTube channel to meet them at the university sometime in the near future. Yeah, thank you. Absolutely.
Thank you so much, sir, for being here, and thank you from everyone from Karyakul. And sorry about Sagar sir's internet No, that's issue fine. there. That's fine. That's fine. Thank you, Kirti ma'am. All the best, dear Thank students.